Hello everyone, welcome to today's presentation on Netaji Subhash Chandra Bose, and we're going to be talking about his contribution to India's freedom struggle. Today happens to be his birth anniversary, and a lot of you may have come across several articles speaking about his contribution and his life and the dedication he had towards the cause of the nation. And this, serves as an addition to what has already been said and been spoken about. So we hope that this is useful for you, and you can of course use it for your preparation, but also to know the person that he was. So the first thing that is of note is that he was elected the president at the Congress session in Haripura in Gujarat in 1938, and then he was instrumental in the setting up of the National Planning Committee, and the chairman was Jawaharlal Nehru, because Subhash Chandra Bose was already serving as the president of the Congress at that time, and so the next best person to lead the National Planning Committee was deemed to be Jawaharlal Nehru. The reason why, in a lot of committees, etc., that were formed at the time, you would see that there were two sort of blocks that were forming in the Congress, or this is how it was portrayed many times, that there was a left wing to it and a right thinking wing to it. Now, Rabindranath Tagore, for example, believed that there were two modern thinking people in the Congress at that time, one being Jawaharlal Nehru and the other being Subhash Chandra Bose. So, they would work well in tandem with each other, as was deemed. Now, Subhash Chandra Bose, as regards this committee that was set up, he had said, "I have no doubt in my mind that our chief national problems relating to the eradication of poverty, illiteracy and disease, and to scientific production and distribution, can be effectively tackled only along socialist lines. The very first thing which our future national government will have to do would be to set up a commission for drawing up a comprehensive plan for reconstruction. This plan will have two parts, an immediate program and a long period program. In drawing up the first part, the immediate objectives will have to be kept in view, will be threefold. Firstly, to prepare the country for self-sacrifice. Secondly, to unify India. And thirdly, to give scope for local and cultural autonomy." And I don't know how many of you would be able to draw the connection, but when you look at the sort of plan that he was drawing up at that time, one is an immediate one, the other is a long period one. This is what effectively, as our economic plans gathered force post-independence, we went to the 5-year plans, and now in fact the system that we have of a strategic plan or a step-by-step plan, this is what it means. So we will have some mechanisms which will be immediately enforced and some will be sought to be enforced over a period of time. दूसरी यहाँ पे बहुत important बात जो इन्होंने की थी वो थी सोशलिज्म की, और जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप even if you're not a student of particularly those subjects that require you to understand these concepts, the point is it's important for you to know कि okay, there's something called capitalism, there's something called socialism, and there's something called communism, and how each of them are similar or different from each other. सोशलिज्म में काफ़ी हद तक एक स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी की बात होती है, और स्टेट इंचार्ज होगा उन रिसोर्सेज का एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम सच दैट देयर इज सोशल वेलफेयर. ठीक है, तो वो सोशलिज्म आप ब्रॉडली उसे समझिए. ऑफ कोर्स व्हेन यू गो इनटू द नुआंसेस ऑफ इट, देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड. नाउ, Subhash Chandra Bose was re-elected to the Congress presidentship in 1939 in Tripuri, and he defeated Patabi Sitara Maiya. अब इसका बैकग्राउंड ये है कि उस समय ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी वांटेड फर्स्ट टू फ्लोट द कैंडिडेसी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लेकिन वो उतने कीन नहीं थे टू कम्पीट अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस एट दैट टाइम. तो बहुत डिस्कशंस डिबेट्स के बाद ये डिसाइड हुआ कि पटाबी सितारा मैया वुड बी कंटेस्टिंग अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस फॉर प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस सेशन एट दैट टाइम.
बट एज इट सो हैपेंड सुभाष चंद्र बोस वन एंड ही वॉज इलेक्टेड. लेकिन तब भी ये जो डिबेट था, ये जो आप कह सकते हैं कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कांग्रेस पार्टी में, ये ख़त्म नहीं हुआ. And Subhash Chandra Bose resigned mainly over differences regarding the Congress Working Committee. He sought to implement certain measures, and he sought to have certain people with him in the Congress Working Committee as the president. And it so seemed, as things were panning out, कि कहीं ना कहीं even though he would be president, लेकिन जो चीज़ें implement की जाएंगी वो गांधी जी के आइडियल्स पे या उनके बताए रास्ते पे ज़्यादा चलेंगी. सो ही मे नॉट बी एबल टू हैव एज मच ऑफ अ फ्री हैंड एज ही डिजायर्ड, एंड देयरफॉर ही मेनली रिजाइंड. बट the story of his contribution does not stop there. So it wasn't limited to being a part of the party at that time. He then established something called the Forward Bloc in 1939. एंड इस फॉरवर्ड ब्लॉक का मेन जो आइडिया था वो यही था कि इट वुड फेवर द प्रोग्राम ऑफ डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नॉट नेगोशिएशन. अब वो ये कैसे करते? The first thing is they would look at liberation of India with workers, youth, peasant and other radical organizations opposing British rule. After independence, this party would work for establishment of a pure socialist society without compromise. अभी हमने बात भी की थी. State planning for reorganization of agriculture and industry on socialist lines होगा. Abolition of every conceivable form of private property in land होगा. ये socialism से काफ़ी मेल खाता है ये characteristic. New or independent monetary or credit system होगा. And world peace, disarmament and friendly relations with socialist countries होगा. और ये जो थोड़ा आपको यहाँ पे इंटरनेशनल आउटलुक दिख रहा है, यही इनफैक्ट आगे जाके एक बुनियाद बना फॉर सुभाष चंद्र बोसेज वर्क for India's freedom even while he was not in India. So when he was abroad, when he was in Germany and then in Singapore and other countries, this this sort of thinking formed the foundation for him actually continuing to contribute to the freedom movement from afar. The first All India conference of the Forward Bloc, it was held in Nagpur 1940 में, और अपनी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में सुभाष चंद्र बोस ने कॉन्क्रीट प्लान ऑफ एक्शन दिया जिससे कि पूर्ण स्वराज या कंप्लीट फ्रीडम मिल सकता था. और इसमें क्या उन्होंने स्टेप्स सजेस्ट किए? तो पहला स्टेप ये था कि द स्ट्रगल दैट वाज लॉन्च्ड एट रामगढ़ should be intensified locally and further widened in its scope under the slogan all power to Indian people. अब रामगढ़ बिहार में हुआ क्या था? बेसिकली एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी, एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस, और ये जॉइंट ऑस्पाइसेस ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक और ऑल इंडिया किसान सभा के अंडर में थी. और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीख किया. आप जैसा कि ये शब्द इंडिकेट कर रहा है एंटी कॉम्प्रोमाइज, तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्लॉक अपनी थिंकिंग में इस तरह भी अलग था. काफ़ी समय के लिए आपको याद होगा कि कांग्रेस और काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स या इन जनरल जो भी थिंकिंग थी ऑफ अटेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, वो इस आशय की थी कि येस वी विल ग्रेजुअली सीक कंप्लीट फ्रीडम. पहले हमने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड से स्टार्ट किया, फिर जब बहुत बहुत हो गया तो हमने फिर क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था. तो लेकिन इस ब्लॉक का ये था कि नहीं, वी वांट कंप्लीट फ्रीडम राइट फ्रॉम द स्टार्ट. स्टेप्स वर टेकन टू प्रमोट एंड डेवलप नेशनल यूनिटी. Measures were adopted for forming panchayat in every locality, beginning from the village right up to the center, to function as organs of struggle and later on as organs of administration. अब रूट टू बर्लिन, तो पहले कांग्रेस के अंदर, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर, और फिर अब एक्सपैंड हुए राइट इन द इंटरनेशनल फोरा टू बर्लिन, जर्मनी. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड दैट इसका बैकड्रॉप ये है कि सुभाष चंद्र बोस के जो आइडियल्स थे और जिस तरह फॉरवर्ड ब्लॉक बना, और जैसा कि समझ में आ रहा था ब्रिटिश को भी कि they would obviously not have it easy, with this man outside of prison for too long. So what do they do? अच्छा, वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था साथ में, तो वर्ल्ड वॉर के बैकड्रॉप में अगेन they did not want further so called enemies या उनके अगेंस्ट जो भी लोग थे कि उनका बहुत फ्री हैंड या उन्हें बोलने की बहुत आज़ादी हो. तो बेहतर ये था कि they would put सुभाष चंद्र बोस behind bars, and that is exactly what they did. But Subhash Chandra Bose did not give up. He went on a hunger strike when he was in prison around the time of the war.
and he wrote to the viceroy on 2nd of July 1940, and he said, "Release me or I shall refuse to live. The individual may die so that the nation may live. Today I must die so that India may live with freedom and glory." Now, it would wreak all sorts of havoc if something were to happen to Bose inside prison like this. So ultimately, he was put under house arrest in Calcutta. It was from here that he left in January 1941 from house arrest, और कहा यूं जाता है कि वो पेशावर पहुंचे एक पठान की तरह से, और फिर काबुल से वो रूस पहुंचे, रशिया पहुंचे इटालियन पासपोर्ट पे, और अल्टीमेटली बर्लिन जर्मनी पहुंचे मार्च 1941 में. He met Hitler, and this Netaji term that you come across, the Indians in Germany used to call him Netaji. तो ये एक उनका सफ़र रहा, and he never gave up on the cause of India even as he was in trouble. Now here what you see is कि अब धीरे धीरे एक थोड़ा formal establishment बन रहा है, and this is actually a reflection of things that were being done to promote India's cause abroad. जैसे जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और मॉडर्न इंडिया के लिए प्रिपेयर करेंगे हिस्ट्री वाला पार्ट, आप देखेंगे कि बहुत पहले समय से प्री कांग्रेस काफ़ी सोसाइटीज़ थी, और उसके दौरान भी काफ़ी ऐसे लोग थे जो दुनिया में जहाँ भी रह रहे थे, चाहे वो यूएस था, कनाडा था, जर्मनी था, इंग्लैंड था for that matter. They were setting up organizations, they were setting up publications, newspapers, magazines, to let as many people know as possible about the cause that Indians were fighting for and the sort of oppression that they were having to undergo under the British rule. तो ऐसा ही एक set of centers, Free India Center जो था, वो सुभाष चंद्र बोस ने रोम और पेरिस में फाउंड किया, और इसी के साथ साथ आज़ाद हिंद रेडियो भी चलता था. अब फ्री इंडिया सेंटर्स का क्या था? दे वुड मैनेज रिलेशंस विद यूरोपियन एक्सिस पावर्स. अब एक्सिस और अलाइड पावर्स, ये जो बैकड्रॉप है ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है, और you know it's been a bit of controversy as well because of the whole history behind the Axis powers, and you know the allied powers sort of rescuing the world from the Axis powers, etc., etc. But when we're talking about Subhash Chandra Bose's contribution to India's freedom struggle, this is what I would advise. I would advise you to look at it more from that perspective जब हम इस context में बात कर रहे हैं, क्योंकि you know when you talk about politics, when you talk about diplomacy, it's never a very straight line. There are several factors at play, there are several ideologies at play, and sometimes एक particular leader जो होता है उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें होती हैं, which may not be what you know the rest of the ideals or members of that particular organization or party stand for. तो उस लाइट में ये चीज़ें पढ़ने की आपको ज़रूरत है. तो what I'm trying to say is that of course you should have your opinions, but form informed opinions, right? Supporting and recruiting volunteers for the Indian Legion of the Waffen SS, running Azad Hind Radio जैसा कि हमने बताया था, and preparing for the much larger provisional government that was formed in Southeast Asia with Japanese support. इसका मेन बेस फ्री इंडिया सेंटर का बर्लिन में था, लेकिन इसके कुछ ब्रांच ऑफिसेज जो थे वो पेरिस और इटली में भी थे. अब जो सबसे इंस्ट्रूमेंटल, आप जिस नाम से शायद जानते भी होंगे, आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में इतना कुछ सुना होगा, वो है आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी. इसका जो आइडिया था वो बेसिकली राश बिहारी बोस से आया था, और it was supposed to be on the lines of the Indian Independence League. Or Indian Independence League, basically again it was a set of organizations that were set up abroad to work for the cause of India's freedom. And this Indian National Army, when it was first formed, it was led by Captain Mohan Singh. And July 4th 1943 में बोस took charge as the president of the Indian National Army. इस बीच काफ़ी कुछ हुआ. जब पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज फाउंड हुई यूँ थी कि जो जापान था उसने
allied powers को पीछे छोड़कर सिंगापुर पे अपना they gained sort of that territory of Singapore, and a lot of British Indian soldiers who happened to be in the territory at that time, they were sort of brought on to the cause of the Axis powers. Acha, it suited the Japanese well because they wanted to have this new set of soldiers on their side. And they were ready to contribute to India's freedom movement, if that sort of helped their cause as well, and vice versa for the soldiers, the Indian soldiers over there. They were ready to take help from the Japanese, if it meant giving impetus to their efforts for establishing a free Indian government. तो यूं हुआ, लेकिन इसके बाद बीच में एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं ऐसा फेज आया कि धीरे धीरे डिसिपेट होने लगे मेंबर्स, उतने सारे मेंबर्स नहीं रहे इंडियन नेशनल आर्मी में. लेकिन जब जुलाई 4, 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने चार्ज लिया, तो अगेन दिस वाज लाइक रिन्यूड विगर इन आज़ाद हिंद फौज, और फिर से इंडियन नेशनल आर्मी में काफ़ी रिक्रूटमेंट और काफ़ी लोग शामिल हुए. फिर ये जो आप देख रहे हैं साइड में 4, गांधी, नेहरू, आज़ाद और बोस, ये थे विंग्स आज़ाद हिंद फौज के. और सुभाष चंद्र बोस जी ने इन लोगों के नाम पे, गांधी जी के नाम पे, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पे और ख़ुद के नाम पर ये 4 विंग्स जो थे इंडियन नेशनल आर्मी के सेटअप किए थे. अक्टूबर 1943 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, जो कि था सेटिंग अप ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया. और ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कैथे हॉल सिंगापुर में अनाउंस हुई. और इसका महत्व ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, इट्स अ बिग थिंग. वन इज़ दैट यू आर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ अ फ्री इंडिया एंड यू आर वेटिंग कि ठीक है ब्रिटिश जब इंडिया से चले जाएंगे तब जाके हमारी एक गवर्नमेंट सेटअप होगी. एक ये होता है कि हमने प्रोक्लेम किया कि नहीं, हमारी ऑलरेडी एक पैरेलल गवर्नमेंट अब हमने सेटअप कर ली है. इट्स अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस. फिर बेसिकली ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, ये बोस की आज़ाद हिंद फौज को, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को प्रॉमिस किए गए जापान के द्वारा नवंबर 1943 में एट द ग्रेटर ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन टोक्यो. और जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, हिडेकी तोजो, उन्होंने अपना डिसीजन अनाउंस किया. एंड सुभाष चंद्र बोस डिक्लेयर्ड, एंड आई कोट, like the Bastille in Paris, which was liberated first in the French Revolution, setting free political prisoners, the Andamans, where our patriots suffered much, is the first to be liberated in India's fight for independence. We have renamed Andamans as Shaheed in memory of the martyrs, the Nicobar as Swaraj. और अब आपको ये भी जानना होगा, और आप लोग इनफैक्ट बताइएगा कि 3 आइलैंड्स हैं जिनको कि रीनेम किया गया था रिसेंटली गवर्नमेंट द्वारा इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स हु वर एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल आर्मी. तो ये कौन से आइलैंड्स हैं, उनके क्या नाम रखे गए, ये आप कमेंट्स में बता सकते हैं. ऑल्सो मैं आपको बता दूं, ये जो अंडमान और निकोबार को जापानीज द्वारा आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को सौंपा गया, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आगे जाके आया जब इंडियन नेशनल आर्मी के कुछ ऑफिसर्स के अगेंस्ट ट्रायल चला ब्रिटिश के द्वारा. INA ट्रायल्स के नाम से एक बहुत ही पॉपुलर पूरा इंसिडेंट हुआ. वो एपिसोड आप शर्तिया पढ़ेंगे व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. एंड उसमें 3 इम्पॉर्टेंट लोग थे, और देयर वाज शहनवाज खान, देयर वाज प्रेम सहगल, एंड देयर वाज गुरबख्श सिंह ढिल्लों. और उनके अगेंस्ट ट्रायल चला था, और भुलाबाई देसाई एट्सेट्रा डिफेंस में उनके खड़े थे एज एडवोकेट्स, एज लॉयर्स. एंड वन ऑफ द डिफेंसेस which became so popular was associated with the fact that Andaman and Nicobar Islands had been ceded by the Japanese to the Azad Hind Fauj at that time, and you must read about it, and you can also mention that in the comments. इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार
जो ट्राइकलर था, इट वॉज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ लिबरेटेड इंडियन सॉइल अप्रैल 14, 1944 में. ये मतलब एक फ्लैग हमारे देश का उस टाइम अनफर्ल हुआ. And this particular thing was led by Netaji Subhash Chandra Bose. The Indian National Army had defeated the British to establish the provincial independent government in Moirang, which was a little town located some kilometers away from Imphal, which is the capital of Manipur. तो आज भी वहाँ पर इसका commemoration है इस बात का. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये पता होना है कि जो फ्री इंडिया की प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसमें बोस सर्व्ड एज द हेड ऑफ स्टेट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर वॉर एंड फॉरेन अफेयर्स. और लक्ष्मी स्वामीनाथन, जिनको कि आप कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से जानते हैं, शी वॉज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द विमेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड द रानी झांसी रेजिमेंट. तो ये पूरा जो प्रकरण था, स्पेशली विद द इंडियन नेशनल आर्मी एंड आज़ाद हिंद फौज एंड द गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट दैट वाज सेट अप, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली. द फैक्ट दैट it was possible to attain liberation from British rule, the fact that this particular attempt was not restricted to people who were working from within India. It could be done by people who were outside as well. Thirdly, gathering that sort of support from foreign powers, whosoever they may be it Germany or Japan at that time. And fourthly, the fact that women would stand shoulder to shoulder in this particular revolution and help the cause of India's freedom. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये बता दिया जाए कि ह्यू टॉय करके एक व्यक्ति थे, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका कि नाम था द स्प्रिंगिंग टाइगर. एंड this was basically one of the first Western accounts of the Indian National Army that was favorable, one of the few Western perspectives at that time that was in favor of the ideals that the Indian National Army stood for. So I hope this was useful for you, and we'll try coming up with more facts. See, I mean, this was a life well lived, right? There's so much to talk about when we talk about Subhash Chandra Bose, and of course a lot of controversies as well owing to his disappearance, etc. But from the exam point of view, and just to give you a bird's eye view of his contribution, we hope this particular video was useful. So keep studying hard, keep preparing, and stay safe, stay healthy. Thank you.